So hello everybody. Recently we have seen that there are lots of protests going on in the country. As a teacher, what I am trying to explain here, what the Constitution of India says about these protests and Indian history में post independence कितने protests हुए, major protests, and what are the outcomes or what were the outcomes of those protests. How does the whole scenario come out and what implications do these protests follow? So let us say, imagine a scenario, a group of people gathered at a place raising slogans against the government. Does the constitution allow this? So let us talk about the Constitution of India and what it says about protests. तो पहले ये समझ लें कि there is no guaranteed word, written word as right to protest in the Constitution. कहीं भी पूरे संविधान में right to protest नहीं लिखा हुआ है. This is not mentioned. But right to protest is derived from Article 19 of the Indian Constitution. Article 19 of Indian Constitution, which is a fundamental right. And in this Article 19, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, I suggest you take a pen, paper and make notes so that this will be helpful for you in your upcoming examinations. कहीं पे आपको कुछ रुकना हो, pause करें वीडियो, take a break and restart and then try to note it down. So Article 19 का 1A, this says freedom of speech. Freedom of speech, बोलने की आजादी. Here, using this article, citizens can criticize the government, they can raise slogans against the government, they can take out placards, and they can also write articles against the government. गवर्नमेंट या सरकार, सरकारी व्यवस्था, किसी की भी बुराई या आलोचना करने का आपको हक आर्टिकल 19(1)A के थ्रू डिराइव किया जाता है, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ सिटीजन्स. ओके, इसके बाद आता है 19(1)B. आर्टिकल 19(1)B, दिस इज freedom of peaceful assembly. Article 19(1)B is freedom of peaceful assembly. Peaceful assembly का मतलब क्या होता है? लोग एकजुट हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से. ओके, एक गैदरिंग हो सकता है शांतिपूर्ण तरीके से. This can be for a social cause, this can be against the government. तो प्रोटेस्ट्स के केस में पीसफुल असेंबली का यूज करके एक यूनियन, एक गैदरिंग क्रिएट किया जा सकता है, बट दे मस्ट नॉट कैरी एनी आर्म्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पीपल हु गैदर फॉर एन असेंबली मस्ट नॉट कैरी एनी आर्म्स. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल विच सपोर्ट्स protest which can be used is freedom of forming unions. Okay, this is 19(1)C, article 19(1)C. You can form a legal entity as unions or NGOs and other organizations which can work for social causes, development issues, which can fight against the government and against the system, which can be used to fight against the government and against the system, which is under Article 19(1)C. But very important aspect, क्या ये fundamental rights
अनलिमिटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है कि दीज आर अनलिमिटेड, दे कैन बी कर्टेल्ड। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है? इंडिया हैज ऑलरेडी सीन दैट इन द ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, जब मैडम इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी इन्वोक किया था, देन द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली, ऑल वेयर सैक्ट। सभी राइट को एनक्रोच कर लिया गया था। क्यों? एज ए मैटर ऑफ, इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। व्हेन देयर इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आई विल राइट इट NATION, national security. If there is a matter of national security, there cannot be a peaceful gathering, there cannot be a formation of union, there cannot be freedom of speech, everything can be curtailed. We have also seen during the COVID period, जब कोविड आया, कोविड के दौरान the fundamental right 19(1)(b, that is right to peaceful gathering, was prohibited. Why was it prohibited? Because it was again a matter of national security. कोविड था, कोविड आया था, ठीक है, but it was again a matter of national security. लोगों के, भारतीयों के जान को खतरा था, इसलिए उन्हीं के फंडामेंटल राइट पीसफुल असेंबली को रोका गया. That was curtailed. So no fundamental right in the country is unlimited. It can always be curtailed. So what is the matter? What is the real use of this session? The real use of this session is to understand what the Constitution of India says about protests. So as far as we have seen that the Constitution says Article 19, 1A, 1B and 1C, which can be derived or which can be used to do protest in the country, but there is no fundamental right which says right to protest. Now let us look into the, ponder into the history post independence, what kind of protests have been there in the country. Okay, so now let us see post independence some of the major protests or movements that happened in the country. So पीरियड देखें तो 1952 से 1953 में पोत्ती सिरारमुल्लू का एक मूवमेंट हुआ था, which was demand for Telugu speaking state. The main issue was demand for Telugu speaking state. Final outcome क्या था? After the death, following fast, गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिएट किया in 1953. It led to a states reorganization matter and the movement was impactful. In 1965, anti-Hindi movement was lodged in Tamil Nadu. Tamil Nadu में एक opposition हुआ, हिंदी being sole official language. हिंदी को एकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने पर तमिलनाडु में एक मूवमेंट चला. इस मूवमेंट से क्या हुआ कि इंग्लिश, आउटकम ये था कि इंग्लिश कंटिन्यूड एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट्स कुड अगेन कंटिन्यू देयर वर्क एज इन इंग्लिश लैंग्वेज. इन 1973-1981 के दौरान एक चिपको मूवमेंट चला. दिस वाज अ रियल मूवमेंट वेयर द नेचर कंजर्वेशन वाज कंसीडर्ड as an issue in the country. So what happened was to prevent, the main reason was to prevent the commercialization and deforestation. एक कॉमर्शियल तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन देश में चलने लगा था उसको प्रिवेंट करने के लिए आउटकम क्या था कि लॉगिंग जितना भी हो रहा था उसमें एक स्ट्रिक्ट इंपोजिशन लगा ड्यूरिंग इन द हिमालयन रीजन्स. पूरे हिमालयन रीजन्स में लॉगिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड कि आप ऐसे डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं. फॉरेस्ट गवर्नमेंट, मतलब द गवर्नमेंट का फॉरेस्ट विंग वाज एक्टिवेटेड एंड इट क्रिएटेड अ ह्यूज इंपैक्ट टू सेव द नेचर कंजर्वेशन में. इन बिटवीन इन 1974 देयर वाज अ नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात. दिस वाज द फर्स्ट बिग मूवमेंट, rather a huge movement against Indira Gandhi government. Indira Gandhi's government was there in the center
and in Gujarat there was also state government was also of Congress party. There were corruption charges, huge corruption charges, inflation बहुत ज्यादा था. इन्फ्लेशन क्या होता है अगर ऐसे समझना चाहें तो एक सामान अगर आपने 2025 में 100 रुपीज में खरीदा हो, अगर उसी सेम प्रोडक्ट का दाम आज 150 रुपीज हो गया तो 50% का इन्फ्लेशन आ गया. ठीक है, वो इन्फ्लेशन बहुत हाई था इन गुजरात एंड देयर वाज ह्यूज करप्शन चार्जेस. चिमन भाई पटेल की सरकार थी अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, देयर ह्यूज करप्शन चार्जेस. इसका इंपैक्ट ये हुआ कि गुजरात गवर्नमेंट वाज डिसॉल्व्ड बाय इंदिरा गांधी मैडम. उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया एंड फर्स्ट इलेक्शंस वेर हेल्ड. देन ड्यूरिंग 1974-75 देयर वाज अ जय प्रकाश नारायण आंदोलन, जिसको टोटल मूवमेंट या टोटल रिवॉल्यूशन या संपूर्ण क्रांति एक्सक्यूज मी संपूर्ण क्रांति नाम से जानते हैं. जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में मेन चार्जेस वर, मेन इश्यूज वर दैट देयर वाज ह्यूज करप्शन ऑल ओवर द कंट्री, गवर्नमेंट वाज बिहेविंग लाइक ए टायरेंट एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर नीडेड. इट लेड टू इंदिरा गांधी invoking emergency in 1975. Madam Indira Gandhi, the then Prime Minister of the country, invoked emergency during 1975. जयप्रकाश नारायण, इनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस जो कि रेलवे एसोसिएशन के थे, और कई आज के जमाने के फेमस लीडर्स, सबको everyone was put behind the bars. The freedom of press was controlled, association was controlled, and emergency was evoked to in the name of national security. Some of other important events that happened post Indian independence during will be telling you in the further video.